Acha ji, before we start solving all these tasks, there are a few concepts which I would want to discuss. Um, these things are going to be repeatedly being used in almost all scenarios. The same concept is going to be used. So I'm just going to create a blank HTML and I will save this on my desktop. So let's say general.html. Okay, you know the concept behind the code and the design. The design is basically the front end of your web page, and the code is basically the code behind it or the back end. You are going to use the concept of, the action of buttons. So buttons usually are on the front end. Probably there's going to be a button here, which is basically going to run a function. You all are aware of the function, right? ठीक है, और फंक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि फंक्शन जब भी डिफाइन होता है तो आप उसको क्या करते हो, कॉल करते हो. सो यू कॉल द फंक्शन. ठीक है, सो फॉर इंस्टेंस if I just write a script here and end my script and I define a function, let's say the function is user, and in the function it is basically going to alert today is Wednesday. Right, the script is down, defined a function, and the function has just one action in it. Now, if we view this in our browser, nothing happens. Why? Because the function is not being called. Okay. So the other method was, in order to call the function within the script, I'm just going to type in the name of my function. So when the processor comes, when it comes on the line 14, it'll see that it's a function defined. 15, the function starts. 16, the instruction or the action basically within the function. And 17, the function is closed. So it's going to pass on 18, 19, 20th. It gets to read that it needs to call the function. So it will go back, it will try to find the name of the function, and whatever actions the function has, they will run. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है एक फंक्शन का. फंक्शन आप डिफाइन करते हो, उसको आप जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक वो रन नहीं होता. ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली इस लाइन पे मैंने इसको कॉल किया. सो इट विल गो बैक, इट विल ट्राई टू फाइंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन. जितने भी इसमें एक्शंस होंगे वो सब रन होंगे. सो नाउ इफ आई रन दिस, you get to see that the alert is visible. Are we clear on this? ठीक है. For instance, if I add another one, right? Now there are two alerts. Again, if I run this, function will be called. It has two actions. One is this alert and then this is this second alert. Okay. ये तो हो गया कि हम स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन को कॉल करें. What if there is an element in your HTML which is actually going to call your function? ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके लिए in the HTML, if you are to, let's say, create a button, so when I click on the button, it will call the function. मैंने calling statement जो है यहां से क्या किया, remove कर दिया. So the function is not called. Now I'm going to create a button, and when I click on that button, that is going to call the function. Do we all get this? ठीक है, button can only be on the front end. ठीक है, it needs to be visible. So let's say in the body, I will create the tag for button. This is how you start a button, and then this is how you end it. Okay. Button के ऊपर, अगर if you look at the design, you don't get to see anything. If I run this as it is in my browser, you get to see this small button appearing, although it does not have any text on it. ठीक है, तो button के ऊपर text लगाने के लिए what you do is, within the tag, I'm just going to type in, let's say,
सबमिट। ठीक है, अब कोड डिजाइन में देखो, you can get to see the button, although it will not operate because it is only function to operate on the front end. Now if I run it in the browser, you can see that the button is made and I can also click on it। ठीक है, अब ये बाय डिफॉल्ट बटन की विजुअल अपीयरेंस इसी तरह की होती है कि HTML पे क्या होता है कि व्हेन यू क्लिक ऑन इट, it will animate like this, although it's not doing anything। What we need to do is we are to connect this button with my function, so we are to call our function by clicking on the button। अब उसके लिए क्या करोगे कि जब बटन का टैग आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, द स्टार्टिंग टैग, जूम इन, उसमें क्या करोगे कि आप उसके लिए एक ऑपरेशन अप्लाई करोगे विच इज गोइंग टू कॉल ऑन क्लिक। ठीक है, केस सेंसिटिविटी मैटर्स, ठीक है, C is supposed to be capital, so on click equals to, within the speech marks I'm going to type in the name of my function, which is, what's the name of my function? User। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या होगा कि when I'll click on the button, it will call on click, it will call this function unless until I click on it, or if I don't click on it, it will not call this function। स्क्रिप्ट में जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग, जब मैं HTML को रन करूंगा या ब्राउजर में उसको व्यू करूंगा तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने फंक्शन तो डिफाइन किया है लेकिन उसको डिपेंडेंट कर दिया किस पे, बटन के ऊपर। सो जब तक कि मैं बटन क्लिक नहीं करूंगा तब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल अ पर्टिकुलर फंक्शन टू रन only when we, let's say, click on a button। अब alerts आ रहे नहीं आ रहे, so if I click on it I get to see the function calling all the actions। ठीक है, so on click of this button I'm calling the function। do we all get this? ठीक है, अच्छा, the other concept that I would want to talk about is, एक तो हो गया कि हमने फंक्शन बनाते हैं, उसको फंक्शन को कॉल करने, और कॉलिंग द फंक्शन इज बीइंग एसोसिएटेड विद अ बटन। सो हाउ वी क्रिएट अ बटन, दैट इज डन। अमल, क्वेश्चन? हाँ, बटन की विजुअल अपीयरेंस होनी चाहिए ना। ऑन योर वेबसाइट्स we do get to see a lot of buttons and those buttons perform a certain action। कहाँ है, स्क्रिप्ट के अंदर है ये। the function is basically the script part। ठीक है, बटन तो विजुअल अपीयरेंस होगी, बटन में हमने एक एक्शन डाला है दैट इट विल कॉल दिस फंक्शन wherever it has to be visible, HTML के अंदर आएगा। ठीक है, बॉडी पार्ट इज बेसिकली, इफ यू हैव डन ICT तो बॉडी पार्ट जो होता है ना वो बेसिकली मेन कंटेंट होता है आपका वेब पेज का, तो इसलिए मैंने बॉडी के बीच में डाला। ठीक है, अब उसको मैं हेडर में डाल दूंगा तो वो विजुअल आपको डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, सो इट हैज टू बी विद इन द HTML टैग, प्रेफरेबली विद इन द बॉडी। यू विल सी कि ये किस तरह आइडिया जो है ना इनकॉर्पोरेट होता है इन एक्सरसाइजेज और द एग्जाम। सिर्फ बात ये समझो कि फंक्शन डिफाइन हुआ लेकिन फंक्शन डिपेंडेंट कर दिया हमने किस पे, बटन के ऊपर, और बटन के ऊपर हमने एक एक्शन लगाना है which says on click। this is also present in my document if I've shared it with you, JavaScript के उसके एंड पेज पे जाओगे you will get to see the actions which the mouse basically supports। so ये उसमें से सबसे ज़्यादा commonly used है आपके एग्जाम सिनेरियोज। हर एग्जाम में ये आपके ना कहीं कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। Keep this in mind, function to be defined in the script, it is being called by clicking on a button। this is how you do it। Zainab, question? On click small में, on click ON is small, C is capital, then small letters, ये केस सेंसिटिविटी है। उसके बाद ये जो फंक्शन है, this also matters। let's say I type in capital U, मेरा फंक्शन किससे है,
small user. Okay, run this. We'll save it. You click on the button. Nothing happens. ठीक है. So coding में the case sensitivity matters. कई दफ़ा ऐसे होता है बच्चे जो होते हैं वो सब कुछ सही लिखा होता है एंड दे आर ट्राइंग टू लाइक दे मिस आउट कि उनका बेसिकली केस सही नहीं है. ठीक है. या एक स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई नहीं है. सो दैट इज वाई कि आपके फिर कोड चलता नहीं है. आए चले. ठीक है. अच्छा जी. नाउ if I want, you do know the technique to deactivate the code, right? I can convert this into a multiple line comment. ठीक है. ये हमें आता है. अच्छा, बटन हो गया associated है with the function. Now if I click on it, the code is deactivated. Do you think it will run? No, it won't. Although it will try to call that particular function, but the function is basically deactivated, converted into a comment, so it won't run. Now if I save this and run it in my browser, it doesn't work. ठीक है. ये हो गया. दूसरी चीज जो हमने बात करनी है वो है इंसर्टिंग. आपने एक चीज देखी थी दैट if we okay, so let's say I would say document dot write and we'll say, इसका मतलब क्या होता है कि on your document, the HTML document, write this text. ठीक है. आउटपुट करने के लिए हम यूज करते हैं document dot write. अच्छा, so now if I run it, it is displayed onto my HTML. ठीक है. What if I want to display this text below my button? Because right now when I run it, it is right next to my button. What if I want the text to be below the button? How do we do it? उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट होता है यूज फॉर इनर HTML. अब वो कैसे होगा? फ्रंट एंड पे दिस इज माय बटन. I will press, let's say, 1 2 3 4 5 times I've entered. ठीक है. This basically goes below the button. और enter press करने से क्या होता है basically? Do we start a new line or do we start a new paragraph? New line. Okay. कंप्यूटर्स में या आपकी जो ऑफिस एप्लीकेशन या जितनी भी हम ये यूज करते हैं एप्लीकेशंस, व्हेनेवर वी प्रेस एंटर वी ऑलवेज स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. जो लाइन होती है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. सो इफ आई कीप ऑन टाइपिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेट्स से, जब मेरी स्पेस खत्म होगी वो ऑटोमेटिकली नई लाइन पे चला जाएगा. बट व्हेन आई प्रेस एंटर इट विल स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, नॉट अ न्यू लाइन. ठीक है. ये बात होगी. दूसरा कि हम जब भी अपने फ्रंट एंड पे कोई चेंज करते हैं तो दैट चेंज इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन आवर कोड. मतलब उसका कोड ऑटोमेटिकली आ जाता है. ऐसा होता है. अब मैंने 5 दफा एंटर प्रेस किया, दैट मीन्स व्हाट? आई स्टार्टेड 5 न्यू पैराग्राफ्स टेक्निकली. ठीक है. नाउ इफ आई लुक एट माय कोड, यू विल सी के पैराग्राफ कोड इज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बीइंग रिटन बाय ड्रीमवीवर. ये बात समझ में आती? ठीक है. सो दिस इज द पैराग्राफ टैग स्टार्टिंग हेयर, एंडिंग हेयर. व्हाई? बिकॉज आई प्रेस्ड एंटर. ठीक है. You can ignore this or I can just delete it, does not matter. इसकी again कोई visual appearance नहीं है. It's basically stating that this is ending of a line. So you see these paragraph tags. ठीक है. इनको हम tags बोलते हैं. अच्छा. Now one of these tags I will let's say over here within the tag, within the starting tag, I will give this an ID. ठीक है. ID हम दे देते हैं इसको line. इस टैग को हमने ID दे दिया. ठीक है. I did not use name, I did not use anything else, I gave it ID. ठीक है. If I have to display my text
at a particular position on my HTML. ठीक है, so that position needs to have an ID. समझ आती बात की? If I want to display my text at a particular position on my web page, it needs to have an ID. So that मैं, जैसे हम बटन के साथ कर रहे थे कि बटन को क्लिक करते हैं हम HTML का एलिमेंट है, तो वो क्या कर रहा है, स्क्रिप्ट के एक पार्ट को रन कर, ठीक है। लेकिन अगर मुझे एक टेक्स्ट चाहिए ऑन माई HTML एट अ पर्टिकुलर पोजिशन, तो दैट पोजिशन नीड्स टू हैव एन ID, ठीक है। अच्छा, अब मैं उसको रिफर कैसे करूंगा? सो फॉर इंस्टेंस इफ आई जस्ट रन दिस एज इट इज, तो मेरा हेलो जो है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पे if I want to display this at this particular position, I will use not document.write, I will use get element by ID, ठीक है। get element by ID, again making sure case sensitivity matters, ये camel format में यूज हो रहा है, the first letter is not capital, element का E capital है, B capital है, I capital। अच्छा, once you write this, open up and close round bracket, and within this you need to mention the ID. The ID is line, right? Dot inner HTML. HTML is capital, all caps, equals to done, ठीक है। तो अब क्या होगा कि my text, this text is going to be written inside my HTML at a particular position which is basically being named as line। एक तो हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया था ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता है कि wherever it finds a vacant space it will display the text, but if I want my text to be displayed at a particular position, तो हम उसको उस position को we need to give it an ID and then we need to refer it to that particular position in our code. So हम कहते हैं कि ये text मेरे डॉक्यूमेंट में inside my HTML at this position. So get the element by ID. Get the element by ID का मतलब क्या है कि ये ID fetch करो HTML से. So you'll try to look in the HTML wherever it finds it. उसके inside the HTML insert this text. Now if we run this, so it appears over here. Okay, I want another line below this line. ठीक है, so for instance अगर मैं करता हूं इसको कि मुझे एक और लाइन डिस्प्ले करवानी है, ठीक है, I'm going to copy this and paste it here. इसका क्या मतलब होगा? एक मिनट, इसका क्या मतलब है? It's okay, I'm स्क्रिप्ट के अंदर मैं सेकेंड लाइन पे जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन मेरा स्क्रिप्ट का कोड जो है वो एग्जैक्टली वही है, ठीक है। अच्छा, नाउ इफ यू रन दिस, नहीं वो छोड़ दो, अब ये देखो ये किस में आया, सिर्फ एक में आया, ठीक है, इट्स द सेम टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, लेट्स से हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट लाइन इज बेसिकली हेलो दिस इज माय आईटी क्लास एंड द सेकंड लाइन इज हेलो दिस इज माय आईटी, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑल्दो दे आर रिफरिंग टू द सेम आईडी। एक जो है वो कोड आपका 28th लाइन पे है, एक आपका कोड किस पे है, 29th पे। ओके, रन दिस, व्हाट डू यू सी, ठीक है। सो 28th लाइन को क्या हुआ, उसने उसको डिस्कार्ड कर दी। इट इज नॉट टेकिंग इट एज अ सेपरेट लाइन, इट इज जस्ट डिस्कार्डिंग इट। ओवरराइट क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोसेसर क्या आएगा, पहले इस पे आएगा, वो कहेगा ओके फेच करो ये आईडी, उसके इनसाइड ये एचटीएमएल टाइप दिस,
ये प्रोसेस उसने की, साथ ही प्रोसेसर 29th लाइन पे आएगा, वो कहेगा अच्छा इसी आईडी को दोबारा से फेच करो और उसके अंदर ये लाइन लिखी। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ओवरराइट हो रहा है। बट इफ आई वांट दिस लाइन टू बी प्रेजेंट और बोथ द लाइंस टू बी प्रेजेंट और प्रिंटेड, ठीक है, बट ऑन सेपरेट लाइंस, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हम नीचे वाली लाइन को भी एक आईडी देंगे। अब मैं इसको आईडी दे देता हूं, आईडी इक्वल्स टू लेट्स से दिस इज लाइन 2, ठीक है। अब मुझे अपने कोड में क्या चेंज करना है, मुझे कोड में यहां पे क्या करना है, लाइन 2 करना है। सो इट विल ऑटोमेटिकली रिफर टू दैट पर्टिकुलर आईडी एंड नाउ बोथ द लाइंस आर गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। अब इसको रन करो, एक ही लाइन में नहीं ना होगा, ओवरराइट हो जाएगा, द इंस्ट्रक्शन विल बी ओवररिटन, ठीक है। वो तो फिर आप लाइन को एक्सटेंड कर लो ना, ठीक है, या कंकैटिनेट का कॉन्सेप्ट यूज कर लें। बट फॉर नाउ just understand this concept that if you want to display a particular text at a particular position on your web page, तो उसको आपको id देना पड़ता है, ठीक है। any element in your html if has to be referred to needs to have an id, ठीक हो गया, needs to have an id। अच्छा जी, इसको जरा फर्दर डिस्कस करते हैं। नाउ अच्छा जी, अब बेसिकली आईडीज हमारे मेंशन्ड है ऑन क्लिक भी है, बट द पॉइंट इज कि मैंने जो कोड है उसको मैंने सारे को डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। सो द बटन विल बी डिस्प्लेड बिकॉज द बटन इज एडेड। अच्छा, मैं क्या करता हूं, आई एम गोइंग टू ऐड एन इनपुट बॉक्स। अब इनपुट बॉक्स के लिए क्या करते हैं, यू जस्ट सिंपली ओपन अप द टैग, यू राइट डाउन इनपुट एंड यू क्लोज इट। इसको दोबारा से क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसको दोबारा से क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। सो इफ आई रन दिस, this is how it is displayed by default. You get the input box and you have the submit button. Okay, fine. अब मुझे आप बताओ पिछला कॉन्सेप्ट, अगर मैंने इस इनपुट बॉक्स को यूज करना है इन माय स्क्रिप्ट, तो इनपुट बॉक्स के लिए क्या चीज डिफाइन करनी इंपॉर्टेंट है, आईडी, राइट। मैं कहता हूं क्योंकि इनपुट को आईडी दे देते हैं इक्वल्स टू लेट्स से इट इज स्पेस, कोई भी स्पेस, ठीक हो गया। इसको हमने आईडी दे दी स्पेस, मैं इसकी टाइप पे डिफाइन करता हूं, मैं कहता हूं जी इसके अंदर ना टाइप होगी टेक्स्ट की। टेक्स्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो बंदा एंट्री कर सकता है दैट इज गोइंग टू बी अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, एनीथिंग अल्फान्यूमेरिक। अच्छा, उसके बाद मैं इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूं ऑफ वैल्यू इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू डबल स्पीच मार्क्स। इसका मतलब क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। एंटर आप कर सकते हो, एंटर आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। टेक्स्ट का मतलब अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, एनीथिंग। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। ये शुरू में जब आप इसको रन करोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ब्लैंक होगी, ठीक है। हम इसको एज इट इज देखते हैं। सो आई कैन एंटर, आई कैन एंटर, आई कैन एंटर सिंबल्स, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज एक्सेप्टेबल। अच्छा, अगर मैं वैल्यू के अंदर डाल देता हूं एक डिफॉल्ट टेक्स्ट जैसे कि लाइक दिस, ठीक है। सो व्हाट डज दैट मीन कि इफ आई रन दिस, द इनपुट बॉक्स विल बाय डिफॉल्ट हैव दिस टेक्स्ट विद इन दैट, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, यहां पे देखो द टेक्स्ट इज ऑलरेडी रिटन इन द इनपुट बॉक्स, हाउएवर प्रॉपर्टीज अभी भी वही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इस पे यही टेक्स्ट होगा। I pressed F5, refresh the web browser, ठीक है। अच्छा, अब जरा सिनेरियो सुनो। I want to enter a particular value in the input box, ठीक है, and then I will click on submit,
and submit will prompt whether I entered the correct value or not. दो तीन चीजें होंगी, बटन चाहिए हमें, बटन से क्या होगा, एक फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, उसका चेक लगाएंगे। चेक क्या करेंगे कि वैल्यू मेरे इनपुट बॉक्स में वो है कि नहीं है। इनपुट बॉक्स का आईडी क्या है, इनपुट बॉक्स का आईडी क्या है, स्पेस, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू चेक द एलिमेंट्स or check the value of the input box which has the id space, ठीक है। और जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो वो उस वैल्यू को चेक करेगा अगेंस्ट अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया। एग्जाम्पल, दिस इज डन, सबमिट इज डन, ठीक है। सबमिट पे क्या है, यूजर का फंक्शन कॉल होगा, इनपुट बॉक्स में आईडी क्या है, स्पेस है। इन दो चीजों की मुझे जरूरत है, ठीक है। अब हम अपना फंक्शन बना लेते हैं, एग्जाम्पल कोड बना लेते हैं, ठीक है। सो आई विल राइट फंक्शन विच इज द यूजर and this is how you write the function. Now within the function I'm going to have my check. check क्या है, if के लिए क्या होता है, round bracket open close, curly bracket open close, else curly bracket open close, ठीक है। so this is my text or syntax for if। इसको हम indent कर देते हैं for better understanding। logical test, what am I testing, I am going to test the value which is going to be entered into my input box। input box का नाम क्या है या id क्या है, space, okay। I would say the space dot value equals to, double equals to लगाएंगे comparison के लिए। so if that value is equals to 5, ठीक है। हम इसके ऊपर क्या करते हैं, the value if true, alert you entered 5, value true that you entered 5, ठीक है। अच्छा, value false, alert you did not enter 5। अब इसको जरा इंटरप्रेट करो। in my input box I can add text, it will accept alphabets, it will accept numbers, ठीक है। after I add them I will click on submit। submit will on click call this function। this function has this condition or selection written। the selection says that space dot value if that is equals to 5। अब space क्या है, space actually ये id है, since it is already specified so I'm just writing space। अच्छा, I can even write it like this, document dot get element by id, okay। the id is space। I can also refer it to like this because I need to fetch the id, क्योंकि उसके अंदर की वैल्यू चाहिए ना। स्पेस जो है वो क्या है, इनपुट बॉक्स का नाम दिया, एक तरह से आइडेंटिटी दी है उसको, उसकी जो वैल्यू है उसमें जो वैल्यू एंटर होगी, क्योंकि वैल्यू क्या की हुई है, ब्लैंक है, ठीक है। अगर वैल्यू 5 है तो ये मैसेज अलर्ट कर दो, अगर नहीं है तो ये मैसेज अलर्ट कर दो। यू गेट दिस, हमने दो तीन एलिमेंट्स को किस तरह कनेक्ट किया आपस में। लेट्स ट्राई दिस आउट। so if I type in text, if I click on submit, आंसर क्या आना चाहिए, so you did not enter 5, click on OK, okay fine, you type in 5, you entered 5। see, this is how you can incorporate things, but important क्या चीज है इसमें, जो एलिमेंट है उसके पास आइडेंटिटी होनी चाहिए, that identity can be fetched in your script। अच्छा, what if मैं अपने उस previous method पे आ जाऊं, I just type in space dot value, ठीक है। what if I do this, if I run it, so will it perform the same thing, so I'm going to type in my name, click on submit, it works। what if I type in 5, it still works।
ठीक है। सो स्क्रिप्ट में एक प्रॉपर्टी होती है, वो ऑटोमेटिकली आईडी फेच कर लेती है। अब ये हमारे क्या है, आईडीई जो है ना हमारा, जो ड्रीम वीवर है, ये ऑटोमेटिकली कर। अगर आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यू शुड बी राइटिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन क्या है कि ड्रीम वीवर उसको इग्नोर भी कर देते। इंपॉर्टेंट क्या है, आईडी होना। ठीक है। अच्छा, व्हाट एल्स? आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अब मैं आपके सामने आई विल डिस्कस सिनेरियो वन। ठीक है, पहले सिर्फ आपने देखना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको समझना है, उसके बाद आप यू विल डू ऑल ऑफ दीज ऑन योर ओन। ठीक है, कीपिंग द कॉन्सेप्ट्स इन माइंड। यहां पे हमारे पास सिनेरियो कहता है जी, required to help another member of staff who is learning JavaScript. They want to learn how to change the HTML attributes. Attributes क्या होते हैं? Properties होती हैं। ठीक है। Open the file jsexample.html in your browser. Resave the file in your TTS folder. You're required to display the balloon images in the cell shown. Okay, fine. Open the file in your text editor. Insert JavaScript code to display the correct color balloon for each button pressed. बटन आ गए। ठीक है। सो बटन के साथ क्या होगा, एक फंक्शन एसोसिएट होगा। ठीक है, और वो फंक्शन क्या करेगा अभी देख लेते हैं। एनोटेट द स्क्रिप्ट विद अप्रोप्रिएट कमेंट्स। यू आर टू मेंशन व्हाट योर कोड इज गोइंग टू डू इन योर ओन वर्ड्स। एनोटेशन बोथ ही है, कमेंट्स। ठीक है, सो आपने कमेंट दे के बताना है। दिस इज बाय द वे 2018 जून सिनेरियो HTML। ठीक है, व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग। उसके बाद नीचे उसने कुछ एक आपको प्रीव्यू दिया हुआ है ऑफ हाउ द वेब पेज इज बेसिकली गोइंग टू लुक लाइक। सो यहाँ पे लिखा है चेंजिंग द कलर्स ऑफ द बलून। दिस एग्जांपल शुड शो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द सोर्स एट्रीब्यूट। नाउ एट्रीब्यूट क्या है, सोर्स का, ऑफ एन इमेज। Complete the example by entering the code to display the correct color balloon in the cell when each button is clicked. यहाँ पे क्या है जी, id equals to balloon placeholder, click the color to show the balloon in the cell, red, green, blue. Fine. अब वर्कफ्लो समझना है आपने कि आपने एग्जाम में करना कैसे होता है। ठीक है, सिनेरियो पढ़ो, समझो उसको, इंटरप्रेट करो, ट्रांसलेट करो, व्हाटएवर सूट्स यू। यू नीड टू मेक सेंस। ठीक है, कि ये एक्चुअली है क्या। उसके बाद व्हेन यू ओपन अप ड्रीम वीवर, यू आर सिंपली गोइंग टू ड्रॉप इन, ड्रैग ड्रॉप योर HTML। अच्छा, कोड को पढ़ना स्टार्ट नहीं करना आपने। ठीक है, सबसे पहले आपने क्लिक करना है डिजाइन टैब को। डिजाइन टैब में जाके आपने देखना है कि आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, आई कैन सी दैट देयर आर 3 बटन्स। ठीक है, अगर इसको मैं जूम कर दूं सो इट्स विजिबल। ठीक है, सो रेड, ग्रीन, ब्लू के बटन्स बने हुए हैं। एक हमारे पास यहाँ पे प्लेस होल्डर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल प्रोबेबली। ठीक है, सो ये कुछ एलिमेंट्स है, बाकी तो ये क्या है, ये टेक्स्ट है आपके उसके ऊपर। अच्छा, आफ्टर रिव्यूइंग दिस इन योर डिजाइन टैब, यू आर गोइंग टू ओपन दिस इन योर ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर में क्यों ओपन करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सो दैट यू नो कि आपके साथ यूजर या यूजर जो है वो इस वेब पेज के साथ इंटरैक्ट कैसे करता है। अच्छा, यहाँ पे देखो चेंजिंग द कलर्स ऑफ द बलून, दिस एग्जांपल, ये एग्जैक्टली वही टेक्स्ट है। अच्छा, नीचे उसके बाद प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर में देखो एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, कैन यू सी दिस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे क्या है, क्लिक द कलर टू शो द बलून इन द सेल। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दीज, इट शुड शो द करेक्ट कलर बलून। कि रेड को क्लिक करूं तो वो रेड बलून दिखाए, ग्रीन को करूं तो ग्रीन बलून आए, ब्लू का करें तो ब्लू। नाउ इफ यू कैन रिकॉल, तो हमने एक ग्राफिक्स में एक सिनेरियो किया था जिसमें वी हैड टू ड्रॉ द बलून्स। ठीक है, ये वो वाला पेपर है, सही है। सो हमने बलून्स ऑलरेडी बनाए होते हैं ग्राफिक्स में। उसके बाद व्हाट वी डिड वाज कि हमने एक एनिमेशन की टास्क की थी जिसके अंदर वो बलून्स जो है वो टॉप पे राइज करते हैं, एक बर्स्ट होता है, ये वो सारा कुछ। सो वो भी इसमें हो चुका है उसी पेपर में। ठीक है, और ये उसका क्या है, ये उसका जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, विच मीन्स कि आपके पास बलून्स ऑलरेडी क्रिएटेड एंड सेव्ड है। ठीक है,
दे वर ऑलरेडी क्रिएटेड एंड सेव्ड, विच इज वाई कि मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी हुई है उसके अंदर मैंने बलून्स और पहले से प्लेस किए हुए, ठीक है, रैंडम इमेजेस है बट दे आर प्लेस्ड। अच्छा, नाउ सिंस वी हैव रिव्यूड दिस ऑल, ब्राउजर में भी हमने देख लिया, सिर्फ एक चीज हमने डिफरेंट नोट की, वो ये थी कि प्लेस होल्डर में देखो कि यहां पे क्या है, ब्लैंक है, इसमें ड्रीम व्यूअर, बट इफ आई ओपन इट इन द ब्राउजर तो हमारे पास यहां पे कुछ एक टेक्स्ट लिखा हुआ था। नाउ इफ यू हैड डन आईसीटी तो उसमें क्या होता है कि HTML जब बना रहे होते हैं और इमेजेस डालते हैं ना, तो उसमें एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट की बात होती है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का फीचर क्या होता है कि अगर आपका ब्राउजर कोई इमेज नहीं दिखा सकता तो वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा देता है, ठीक है। नाउ सिंस देयर इज नथिंग डिस्प्लेड इन दिस प्लेस होल्डर तो वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा रहा है। फाइन, एलिमेंट्स कितने आपने देखे, आइडेंटिफाई किए, हाउ मेनी एलिमेंट्स? 3 बटन एंड 1 प्लेस होल्ड, राइट। अच्छा, अब जब आपने रिव्यू कर लेना है ना वेब पेज पे कंटेंट्स को, उसके बाद आपने आना है और एलिमेंट्स के कोड्स को आपने जरा गौर से देखना है, ठीक है। सो आई विल सिलेक्ट माय प्लेस होल्डर, दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। प्लेस होल्डर को सिलेक्ट किया, कोड में गए और उसका कोड जो है वो हाईलाइट हो गया। अब इसके कोड को देखो कि यहां पे लिखा हुआ है कि ओके हाइट इज दिस, इमेज सोर्स, इमेज सोर्स देखो क्या है, जूम इन, इमेज सोर्स क्या है, इट्स ब्लैंक। आईडी देखो क्या दी, इट हैज बीन गिवन एन आईडी ऑलरेडी। एलिमेंट्स को हम क्या देना होता है, आईडी देना होता है, ताकि हम उसको स्क्रिप्ट में फेच कर सकें। अब यहां पे देखो ये लिखा हुआ विड्थ ऑल्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, राइट। सो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में उसे लिखा हुआ है आईडी बलून है, प्लेस होल्डर है। मैं यहाँ पे आई विल टाइप इन माई नेम, सो दिस इज माई ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। इफ आई रन दिस, you can see in the browser it is displaying my alternative text, ठीक है। सो ये भी उसने ऑटोमेटिकली पहले से दिया हुआ था आपको। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उस एलिमेंट के ऊपर क्या है, आईडी है, ओके। सो दिस एलिमेंट इज कवर्ड। अब आगे चलते हैं, बटन को देखते हैं। we'll select the red button, we come back to the code and we get to see that the button code is basically written. The type is what, button on click, ऑन क्लिक। ये हमने अभी देखा कि ये क्या करेगा, इस फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा, शो रेड, ओके। डू वी हैव एनी स्क्रिप्ट, नो, फाइन। सो टेक्स्ट क्या है उसके ऊपर, रेड है। इसी तरह देखो ग्रीन के बटन का, वो किसको कॉल कर रहा है, शो ग्रीन को कॉल कर रहा है। ब्लू किसको कॉल कर रहा है, शो ब्लू को कॉल कर रहा है, फाइन। नाउ वी नो द सिनेरियो कि हमने क्या करना है कि जब बटन्स पे क्लिक हो तो प्लेस होल्डर में एट अ पर्टिकुलर पोजिशन इट नीड्स टू गो, ठीक है, इट नीड्स टू डिस्प्ले एन इमेज। अच्छा, इमेजेस कहां पे है, इमेजेस हमारे उसी वर्किंग फोल्डर में है जहां पे हमारा HTML फाइल भी पड़ेगी, ठीक है। दे आर नेम्ड एज रेड बलून, ग्रीन बलून एंड ब्लू बलून। इनके जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है और इनकी जो एक्सटेंशन है या फॉर्मेट है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो इफ आई राइट क्लिक ऑन इट on one of the balloons and I click on properties, you get to see कि इसका फॉर्मेट क्या है, PNG है। So technically इस फाइल का नाम क्या है, redballoon.png, ठीक है, ये इसका कंप्लीट नाम है, ओके फाइन। Now let's start writing a code. On click it will call what, this function. So we know कि in our script we are going to start our script, end our script. We are going to start off with a function which is going to be show red. So function show red, bracket open close, and then curly bracket open close. हमने सिंपल काम ये करना है कि जब वो उस बटन पे क्लिक करे हमें उस प्लेस होल्डर में रेड बलून डिस्प्ले करना है। हम सिंपली रखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। व्हाट्स द आईडी,
No, the id is balloon. The placeholder id is balloon, so we'll type in balloon डॉट. एट्रीब्यूट की बात होती है. एट्रीब्यूट जो होता है वो आपके एलिमेंट के साथ लिखा जाता है बाय सेपरेटेड बाय अ डॉट. ठीक है. सो डॉट एसआरसी मींस सोर्स. ये हमें लिखा हुआ है यहाँ. राइट नाउ द सोर्स इज ब्लैंक. हमने सोर्स क्या डिफाइन करनी है कि ओके वंस यू क्लिक ऑन दिस रेड बटन it will call the function showRed, and the showRed function basically is going to change the source of the id which is balloon. source को क्या कर देगा equals to you get this. ठीक है. एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में लिखा है. सोर्स को क्या कर देगा ये कर देगा. लेट्स ट्राई दिस आउट. if I have done this whole process correctly, if I click on the red button, it should display the red balloon in this placeholder. So displays the red balloon. ठीक है. If I click on the green, nothing is associated. Blue, nothing is associated, but red is associated. अच्छा. Similar is the case with the green and blue balloon, right? ठीक है. तो हमने ये कोड हमारा काम करता है. कॉपी किया, paste. What do I need to change? This is basically green. This function is basically blue. Okay. Source needs to be green and this needs to be blue. ठीक है. अब इसको रन करते हैं. So red, green, blue. They keep on changing the source of the balloon. Same concept. Element id, get the element by id, उसकी property. It can be a source, it can be a value. For the value it will be probably a placeholder value, or placeholder में तो हम value नहीं डालेंगे, हम तो basically input box में value डालेंगे. ठीक है. So this was the solution to your 2018 June task of JavaScript. This task had what? I think it was for 10-15 marks. हाँ हाँ. So इसी तरह लीड करता है. आपका भी इसी तरह होगा. Very a few scenarios in which nothing is basically related. ठीक है. इसको आप प्रैक्टिस कर लो. Then I'll talk about the task 2 and task 3. अच्छा. अब let's try to look at task 2. मैं बार बार इतना डिटेल में वैसे मैंने कहीं पे भी नहीं करवाया, लेकिन there are few things which you need to note. ठीक है. Workflow will matter. You also saw कि there were a couple of cases जिसमें क्या हो रहा है, सिर्फ spelling mistakes है and the function does not run. ठीक है. So case sensitivity, the correct spellings, syntax, everything matters in scripting. Now moving on to the task 2, which is again a 2018 November task. अच्छा जी. For 15 marks. It says top table needs to train one of their employees to maintain their website. The employee is developing a script to register the users. To register for access to their account, each user needs to enter their details and create a password. Fine. Their password must be at least 5 characters long and must be entered twice to avoid entry errors. You're required to finish the script in the file jstask.html. The script must
compare the passwords entered to check that they match, check that the passwords consist of at least 5 characters, display messages to the user as specified in the file. The JavaScript code to check the passwords match has been started but does not work. So they say that they already started off with the script, but it does not work. Now you are required to correct and complete the script. Include programmer's comments to explain your corrections and additions. And then you have to resave this by password check underscore center number underscore your candidate number. ठीक है, समझ आ रहे हो सिनेरियो? पासवर्ड एंटर होगा, पासवर्ड चेक होगा, पासवर्ड के मैच करता है कि नहीं करता वो चेक होगा, पासवर्ड के कैरेक्टर्स कितने हैं वो चेक होगा. ठीक है, और अप्रोप्रिएट मैसेजेस भी आपके डिस्प्ले होने चाहिए. नाउ स्टेप नंबर 1. You'll open up your Dreamweaver and straight away you will drop your HTML in your IDE. पहली चीज मैंने क्या बताई? कोड को नहीं देखना, डिजाइन को चेक करना है. डिजाइन में जाके देखना है कि अच्छा कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या टेक्स्ट है, हाउ इट इज बेसिकली बीइंग लेड आउट. ठीक है, जस्ट हैव अ फील ऑफ द वेब पेज. Once you have reviewed it in the design, open it up in your browser always. ठीक है जी. अब ये ब्राउजर में मैंने ओपन किया. आई कैन सी दैट देयर इज सिंपल पासवर्ड चेक स्क्रिप्ट. Enter your password here, confirm your password here. We can see there are 2 input boxes. We already talked about input boxes. And there is a submit button. If I click on it, it basically displays a message as well. Under what? The button. ठीक हो गया. So if I type in, let's say my password, which is basically this, the number of characters are also 6. My name has 6 letters. ठीक है. So satisfy this condition. Are they lesser than 6 or lesser than 5? No. So it should be accepted and the password also matches. So if I click on submit, it says passwords do not match. So this does not work. और उसने हमें यहाँ पे कहा भी है कि script start हुई है but it does not work. So probably it has flaws or errors in it. Now, once you have reviewed it in your browser, then the third step, पहला स्टेप था डिजाइन में उसको चेक करो, दूसरा स्टेप था ब्राउजर में उसको चेक करो, उसके साथ एलिमेंट्स को चेक करो, और थर्ड स्टेप है व्हेन यू कम बैक टू योर ड्रीमवीवर, क्लिक ऑन योर एलिमेंट्स and review their code. So if I click on this input box, I go on to my code, I see that it's an input box with an ID what? P-word1. इस इनपुट बॉक्स को आईडी दिया हुआ है. ठीक है, और ये आईडी हमारे काम आएगा सो दैट वी कैन रिफर इट टू इन आवर स्क्रिप्ट. अच्छा, टाइप क्या है? इट इज अ टेक्स्ट. और वैल्यू क्या है? बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है. ठीक है, इसी तरह इफ आई क्लिक ऑन द सेकेंड इनपुट बॉक्स एंड गो ऑन टू माई कोड, दिस इज द कोड फॉर द सेकेंड इनपुट बॉक्स. इसको भी आईडी दिया हुआ है विच इज p-word2. The type is text. Except क्या करेगा? Text. Value क्या है? Default blank है. Fine. ये भी हो गया. उसके बाद हमारे पास था जी यहाँ पे submit, which is a button. इसको हमने select किया, हम कोड में आए, हमने चेक किया कि अच्छा बटन क्या है. Button is basically a button type. On click, it is basically calling what? Password check. This function. The text on the button is submit. This is where the button ends. So there are 3 elements, 2 input boxes and 1 button. And button is calling password check. The 2 input boxes are being given p-word1 and p-word2 as their IDs. Fine. अब हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट हुई भी है, एंड भी हुई भी है. उसके अंदर फंक्शन भी डिफाइंड है. फंक्शन इज पासवर्ड चेक. पासवर्ड चेक कब होगा? जब बटन पे क्लिक होगा. सो इट विल बी कॉल्ड. अब यहां पे लिखा हुआ जी प्लीज करेक्ट दिस कोड.
Okay, this seems to be a simple if statement which is written. Let's review it. First, we are going to bring this to our अंडरस्टैंडिंग. हम इसकी इंडेंटेशन, इसकी अलाइनमेंट कुछ इस तरह करेंगे कि हमें समझ आ जाए. ठीक है. सो इफ के बाद क्या होता है, राउंड ब्रैकेट में आपका क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट होता है. लॉजिकल टेस्ट के बाद कर्ली ब्रैकेट्स हैं विच इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी आवर वैल्यू इफ ट्रू. सही है. उसके बाद हमारा एल्स आता है और उसके बाद आती है हमारे पास वैल्यू इफ फॉल्स. मैं अभी देखता हूँ, वो उसने कहा हुआ ना कि प्लीज करेक्ट दिस कोड. ठीक है. सो इट डज नॉट वर्क. अच्छा, यहां पे लिखा हुआ जी पी वर्ड 1, पी वर्ड 2. पी वर्ड 1 क्या है, इनपुट बॉक्स है, उसका आईडी है. लेकिन क्या हम उसके आईडी को मैच कर रहे हैं? नो, हम उसकी वैल्यू को मैच कर रहे हैं. अच्छा, तो यहां पे हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई कंपैरिजन जो हो रहा है वो तो आईडीज का हो रहा है, वो वैल्यूज का थोड़ी हो रहा है. तो वी विल री राइट दिस होल थिंग. ठीक है. अब क्या है, p word 1 dot value is equals to p word 2 dot value. So this is my comparison. Case sensitivity and spellings, double check everything. अच्छा, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, document dot get element by id check 1. लो, ये तो हमने देखा ही नहीं. So where is that? ये देखो, पैराग्राफ में there are 3 tags mentioned. There are 3 different IDs on 3 different lines. One line is being given the ID check 1, one line is given the ID check 2, and one line is given the ID result. So ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि if we want a particular text to be displayed at a particular position on the web page, ये वो वाला concept आ गया. ठीक है. So हमने क्या, document dot get element by ID check 1 dot inner HTML equals to passwords do not match. Is this correct? अगर ये वैल्यू इसकी वैल्यू के इक्वल होगी तो फिर तो आना चाहिए पासवर्ड्स मैच. ऐसे ही होना चाहिए ना. इफ द वैल्यू ऑफ p word 1 एंड द वैल्यू ऑफ p word 2 आर इक्वल तो फिर तो पासवर्ड मैच होना चाहिए. else again dot inner html it should be passwords do not match. ठीक है. अभी हमने इसको रीराइट किया या करेक्ट किया. सही है. यू ऑल्सो हैव टू एनोटेट दिस. तो आप इस यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि जी आपने क्या क्या किया, व्हाट यू आइडेंटिफाइड एंड व्हाट्स रॉन्ग विद इट. ठीक है. सो नाउ इफ वी रन दिस, हमारे पास ये आ गया ब्राउजर में. अब हम क्या करते हैं कि विल टाइप आवर पासवर्ड एंड वी क्लिक ऑन सबमिट. So it works. Let's say if I change this value, click on submit, do not match. Okay, I'll type it again. I'll click on submit, passwords match. If I do this, click on submit, does not match. So this is working fine. समझ आई? सही. So पहला जो उसका रिक्वायरमेंट थी कि the password should match, वो तो हमने कर ली. अब आ जाओ दूसरी रिक्वायरमेंट पे. यहां पे देखो उसने एक कमेंट ऐड किया हुआ है, एंटर कोड टू डिस्प्ले पासवर्ड इज टू शॉर्ट इफ द पासवर्ड इज लेस देन व्हाट 5 कैरेक्टर्स. वेरी नाइस. अब हम इसके लिए लिखेंगे कोड. कोड क्या लिखेंगे, इफ राउंड ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एल्स कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज. नाउ indented according to your understanding. This is my value true, else comes here, and this is my value false. What am I testing? I am testing the number of characters. Number of characters मुझे बताओ कि एक्सेल में हम कैसे निकालते हैं. लेंथ. लेंथ से क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हो आप. ओके फाइन. सो हमने यहाँ पे वही काम करना है. हमने क्या करना है, p word 1 dot value dot length. Value की length, if that value's length is let's say less than 5,
एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स होना चाहिए ना, एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स होना चाहिए. If that value's length is less than 5 or p word 2 dot value dot length is also less than 5, चाहे p word 1 की हो चाहे p word 2 की हो, अगर उनकी लेंथ लेस देन 5 है तो क्या करना है, हमें ये शो करना है that the password is too short because it does not satisfy the number of characters. ऐसा है कि नहीं? ठीक है. अब मैं बजाय इसके कि मैं खुद लिखूं और मैं गलती करूं, I know कि this line was operating just fine. True? I will use the same line and I will paste it here. However, I want this text now to be displayed at the line below check 1. So that means my ID is going to be check 2. And the text password is too short. सही हो गया. और अगर ये लेंथ जो है वो इक्वल्स टू या ग्रेटर देन 5 है तो फिर क्या होना चाहिए, पासवर्ड इज ऑफ परफेक्ट लेंथ, राइट. तो मैं इसी लाइन को अगर कॉपी कर लेता हूं और यहां पे रिप्लेस कर देता हूं और मैं उसे कहता हूं कि इफ द कैरेक्टर्स आर गोइंग टू बी इक्वल और ग्रेटर देन 5 देन द पासवर्ड इज ऑफ परफेक्ट लेंथ. डू वी गेट दिस? समझ आती है इस बात की? अब इसको टेस्ट करते हैं. Run this. Now we'll type in our password. We'll type here as well. Now when I'll click on submit, I should be getting 2 lines as a result. एक लाइन में लिखा होना चाहिए that the passwords match. दूसरी लाइन में क्या लिखा होना चाहिए, password is of perfect length because the number of characters are more than 5 or equals to 5. So click on submit. It works. अच्छा, अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो सबमिट पे क्लिक करूंगा तो पासवर्ड्स डू नॉट मैच बट दे आर गोइंग टू बी ऑफ परफेक्ट लेंथ. व्हाई? बिकॉज ये 6 कैरेक्टर्स और ये कितने 5 है. सो इफ आई क्लिक ऑन सबमिट इट जस्ट डिस्प्लेज दैट द पासवर्ड्स डू नॉट मैच. अभी करते हैं उसको भी. ठीक है, ये समझ आ रही. अब यहां पे देखो, अगर इफ आई रिमूव वन मोर कैरेक्टर नाउ दे मैच एंड दे आर आल्सो ऑफ परफेक्ट लेंथ. ओके, व्हाट इफ they match but they are not of perfect length. So if I click on submit, the passwords do match but they are too short. ठीक है, समझ आती है. So it's working fine in all scenarios. If I 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 match perfect length, क्योंकि equals to और greater के लिए it will be acceptable. One is 5 characters and one is 3. 1 is 5 and 1 is 3. पहली बात कि this is 5, this is 3, right? When I click on submit, do they match? No. No. So the first line will say Password is do not match. Next line would say क्यों too short? Because one of them is less than 5 characters. हमने और का ऑपरेटर इस्तेमाल किया ना बीच में कंडीशन. ठीक है, सो ये बात है. अच्छा, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट नाउ सेज एंटर अ कोड टू डिस्प्ले द रिजल्ट, प्लीज री एंटर योर पासवर्ड और पासवर्ड इज स्टोर्ड. अब मुझे ये बताओ, री एंटर की सिचुएशन कब होगी? कीवर्ड की बात ना करो, दो मेन सिनेरियोस. हाँ, कौन सा डॉट? ये बेटा सिंटेक्स का हिस्सा है इसलिए लगा रहे हैं. जैसे डॉट सोर्स किया है ना, इसी तरह डॉट इन HTML. अच्छा, सो री एंटर की सिचुएशन कब होगी? जब मैच भी नहीं होंगे और जब लेंथ भी शॉर्ट होगी. व्हाट इफ के मैच हो और लेंथ शॉर्ट हो?
तब भी तो री एंटर नहीं होना चाहिए, है ना। तो दोनों सिनेरियोज जब आपके फॉल्स हो जाएंगे या उनमें से एक भी अगर फॉल्स हो जाएगा तो आपको क्या होगा, यू हैव टू री एंटर। समझ आ रही बात? सो आई विल टाइप इन इफ, अब ये देखो ये क्या कर रहे हैं, इफ p word 1 dot value equals to p word 2 dot value, ये इक्वल हो गया, इसको मैंने होल ब्रैकेट में रख दिया, दिस इज वन सिचुएशन, ओके। एंड अगेन होल ब्रैकेट्स में मैं क्या करने लगा हूं, आई विल टेक अप p word 1 dot value dot length is greater than or equals to 5 or p word 2 dot value dot length is greater than or equals to 5। थोड़ा सा लंबा हो गया लॉजिकल टेस्ट, लेकिन इट्स एक्चुअली द सेम स्टेटमेंट। पीछे वाली देखो, इफ द वैल्यू ऑफ p word 1 is equals to the value of p word 2, जब ये हो साथ ही साथ उसकी लेंथ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो और इसकी भी लेंथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो, तो हमारे पास क्या डिस्प्ले होना चाहिए और कहां होना चाहिए, हमें ये डिस्प्ले करना है कहां पे, रिजल्ट वाली थर्ड लाइन, ओके दैट्स द आईडी, ओके फाइन। हम इसके बाद नीचे आ जाते हैं और हम अपना वैल्यू इफ ट्रू टाइप करते हैं, वैल्यू इफ ट्रू इज गोइंग टू बी हियर, सो डॉक्यूमेंट dot get element by id, the id is enclosed in round brackets, the name of the id is result, capital R है कि small r है, capital R है, okay, so capital R result dot inner html equals to, what should be the message, पासवर्ड इज स्टोर्ड, राइट, ये उसने लिखा हुआ यहाँ पे कि पासवर्ड स्टोर्ड का मैसेज देना है, ओके सो आई वुड से पासवर्ड स्टोर्ड, ठीक हो गया। और अब अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, दैट शुड बी रिजल्टिंग इनटू प्लीज री एंटर पासवर्ड, ओके फाइन। सो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट प्रेस एंटर, आई विल टाइप इन एल्स कंडीशन and over here I'm going to paste this, I would say please re-enter password, ये एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने खुद से डाले हैं, ठीक है, सो यू शुड नॉट डू इट। अच्छा लेट्स ट्राई दिस आउट, we're going to type in our password, we click on submit, passwords match, they are of perfect length, they should be stored, हो गया, सही आ रहा है, देख लो। अच्छा there's a difference in the p word 2 value, passwords do not match, they are of perfect length, re-enter, ठीक है, so we click on submit, so part do not match, perfect length, re-enter, okay fine, passwords match, perfect length, stored, ठीक हो गया, okay। What about this case, match do not a perfect length, too short, and re-enter, so again working in all conditions। अब एक थोड़ा सा माइनर ट्वीक करना है हमने, इधर देखें, व्हाट डू यू थिंक इफ द पासवर्ड इज ऑफ परफेक्ट लेंथ, बेटा इधर देखो अरीबा, इफ द पासवर्ड इज ऑफ परफेक्ट लेंथ, if the passwords match, do I need to notify the user? अगर पासवर्ड की लेंथ बिल्कुल ठीक है, अगर पासवर्ड मैच भी हो रहा है, तो मुझे यूजर को बताने की जरूरत है, नो, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज पासवर्ड मैच जहां पे लिखा हुआ है मैंने उसको डिलीट कर देना, स्पीच मार्क्स रहेंगे, सिर्फ टेक्स्ट को डिलीट करिए, सो इट विल बी ब्लैंक, ओके। पासवर्ड अगर परफेक्ट लेंथ का है तो हम उसको इंटीमेट नहीं करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। So basically
only the error will be prompted, only the error will be displayed. So अगर वो मैच नहीं करेगा तो वो डू नॉट मैच करेगा, अगर वो शॉर्ट होगा तो वो पासवर्ड टू शॉर्ट होगा, अगर पासवर्ड स्टोर होगा तो वो उसको शो करना चाहिए, अगर पासवर्ड री एंटर करना है तो वो उसको शो करना चाहिए. You get it? ठीक है. Now if I run this, I'll type in the password. We click on submit. They match. Perfect length. तो मैसेज क्या आना चाहिए सिर्फ? It is stored. You get this? अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने ये कर दिया तो अब मुझे एरर क्या आना चाहिए? Do not match. परफेक्ट लेंथ वाला तो आएगा नहीं और री एंटर आएगा. सो डू नॉट मैच, री एंटर. अच्छा, उसके बाद मैच वाला एरर, मैच वाला तो नहीं आएगा कि दे मैच, टू शॉर्ट एंड री एंटर. ठीक है. सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू योर JS Task 2 which is 2018 November session, I guess. ठीक है. Practice this so that we can discuss the third scenario as well. अच्छा जी, अब जरा टास्क 3 को जल्दी से देखते हैं. आई विल बी डूइंग इट वेरी क्विकली. ठीक है. Okay, we can't do this in 10 minutes. This is going to be a long one. अच्छा, आप इस तरह करो for Friday. ठीक है. I will be sharing this lecture in a while as soon as I get to another campus. मैं आपके साथ शेयर करूंगा. इसको रीडू करो दोनों को और साथ में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके थर्ड को अटेम्प्ट करके आए फ्राइडे. ठीक है. अटेम्प्ट करके आए. ठीक है. यू शुड नो कि एक्चुअल सिनेरियो क्या है एंड व्हाट वी नीड टू डू. इट इज ओनली 10 marks but the code is going to be a bit lengthier for this particular case. ठीक है जी.